Yes, yes, well, very good morning to everyone. And now this is actually the time to go for a new unit, which is the unit number 3. We are moving on. And under this unit, we have a target to go for some classification understanding. We are going to work with the classification, theory of classification, and understanding of it. And see what exactly the classification mean it. I'm just taking a review of each and every unit sequentially. The reason behind that you may have a proper connectivity of the syllabus, and during the composition of the syllabus that has been maintained, that there should be a good flow, good connectivity, good understanding, and a good learning part. See, when we started the unit number 1, we were just giving an idea to you what exactly the meaning of a machine learning here. I'm just taking a little review to really make you connected with each and everything. So at the very starting, we have in a unit number 1 a basic idea, introductory part of the machine learning theorem. What exactly it is, what are the different types of machine learning theorems are there. Then immediately we move to the next thing, which is called as a validation technique. Validation technique is somewhat related with, if suppose you are applying a certain kind of a machine learning algorithm, then that particular machine learning algorithm will be feasible for any sort of a situation and surrounding would be tested first. And until and unless you are extremely assured that this particular algorithm is going to work properly within every sort of a situation for which we are making it and designing it, obviously, then only it can be applied. So that what it shows that a proper validation technique is there. So the unit number 1 is somewhat related with the machine learning theorem and its types, and the different kind of a validation processes are there. And suppose that you are going to move initially for a machine learning algorithm in the machine learning theorem, then at the very first stage it might be required that you should have a certain kind of a pre-processing. So that's all totally depending upon what it is, totally depending upon that we are working with machines. We are trying to give a brain to machine. See, we are not going to give a commands to machine. We are going to give a brain to machine, that for a situation the machine can think on to act and to react, for which it is not being actually given a command or instructions. कहने का मतलब यहाँ पर बिल्कुल सिंपल है कि मशीन को हम वी आर गोइंग टू गिव अ ब्रेन, हम मशीन को ब्रेन देने वाले हैं, जिसका मतलब ये है कि यहाँ पर हमारी जो मशीन है, that particular machine is going to get a brain to take a decision under situation, उन situations में decision लेगी जहां पर उसको explicitly command और instructions नहीं भी दिए थे, वहां पर वो decision ले पाई. So this is basically called as the whole crux of the unit number 1. In the unit number 2, when we started with a very simple kind of a thing, what the humans started early for the learning purpose. As a human, we have already gone for supervised and unsupervised machine learning, and finally we have gone for by experiential learning, which is the reinforcement learning. हम तीनों ही learning के बारे में बात करते हैं. तो हमने start किया था, कहाँ से start किया था? First of all, we always started with the unsupervised machine learning. See, when there is a child, सबसे पहले जब child है वहां पर, what happens? At the very initial stage, very initial stage, what happens? The child has only the one thing to identify the things on the basis of differences. On the basis of differences. What is that difference? That difference, this thing is different from another. ये चीज दूसरे से अलग है. And the making of one thing from different from another one is unsupervised machine learning, and this unsupervised machine learning makes a cluster of the things. बच्चा अपनी मर्जी की पसंद की चीजों को लेना स्टार्ट कर देता है. This is like my toys, I like it, and few things which you do not have that might be very important for you, लेकिन वो बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा important नहीं है, because it is trying to supervise, unsupervised machine learning, it is trying to create and putting the clusters of that. When we are reaching to the unit number 3, then it comes to the classification algorithms. This is a supervision. It means something is there, you are identifying already, then you are trying to match the things and putting that particular into the classifications. For an example, आप सभी लोगों को समझाया जा चुका है
डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, शेप्स एंड साइज के बारे में। अगर मैं आपको कोई शेप और स्ट्रक्चर देता हूं तो व्हाट यू डू, यू चेक द स्ट्रक्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर स्क्वायर, because the square is already in your mind, and you try to match that square with this square. You try to match that is triangle with the triangle already stored in your mind. So in your mind there is a one picture, then image, then dimension, and you're trying to match with this one. So when a certain kind of a level information is already being provided, so on the basis of that information, the level, what happens? What happens? Under this situation, a classification will take place. So over this, we are having a target to understand first name based classifier. आप सभी लोगों को इसका नोट्स भी मिल जाएगा, ये वीडियो रिकॉर्डेड लेक्चर है, दैट विल बी आल्सो अवेलेबल ऑन आवर यूट्यूब चैनल. सो यू कैन फाइंड आउट, देयर आर द प्लेलिस्ट, वहां पर प्लेलिस्ट भी अवेलेबल है. सो एवरीथिंग इज देयर, ओके, एंड एवरीथिंग इज अवेलेबल इन योर ड्राइव एज वेल. ड्राइव पर भी आपकी सारी चीजें अवेलेबल है. So now coming on the name base. So basically this is based on a scientific names, and the kind of algorithm which is given to you is the basic Bayes theorem. What exactly it is? Name base classifier are a collection of classification algorithm based on Bayes theorem. It is not a single algorithm but a family of algorithm where all of them share a common principle. एक ही common principle बहुत सारे algorithms काम करते हैं. That is, every pair of features being classified is independent of each other. जिस किसी भी पेयर को हम क्लासिफाई कर रहे हैं, जिस किसी भी पेयर को क्लासिफाई कर रहे हैं, is independent of each other. वो एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंट होना चाहिए. Then we can classify, isn't it? So Bayes classifier is working, Bayes classifier is supporting, and it is definitely working on the common principle. The common principle is too good. This common principle is identifying, this common principle is helping. What it is helping? The common principle is identifying, and the common principle is helping us that every pair of feature being classified is independent of each other. मतलब आप किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, जैसे सपोज दैट आपका ब्रेन है, मुझे भी क्लासिफाई करेगा ना. जब आप मुझे क्लासिफाई करेगा और लोगों के कंपैरिजन में क्लासिफाई करेगा ना, नंबर ऑफ द टीचर्स आर टीचिंग यू. जब वो क्लासिफाई करेगा तो क्लासिफाई करते वक्त एट दैट मोमेंट, उस पर्टिकुलर मोमेंट पे व्हाट हैपेंस, क्या होगा उस मोमेंट पे जब वो मुझे क्लासिफाई कर रहा होगा, तो इट ट्राई टू पिक अप माय सम फीचर्स. बहुत इंपॉर्टेंट बात है, आपका ब्रेन इसी तरीके से काम करता है, रिमेंबर, है ना. इट ट्राइज टू पिक अप सम फीचर्स. ये फीचर्स को पिक करेगा, जिन फीचर्स के बेसिस पर ये काम करेगा, फीचर नंबर 1, फीचर नंबर 2, फीचर नंबर 3, ये जो फीचर्स होंगे वही वो कह रहे हैं एवरी पेयर ऑफ फीचर्स बीइंग क्लासिफाइड, जिनको क्लासिफाई किया जाना है, इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. आपस में इनकी डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, तभी प्रॉपर क्लासिफिकेशन हो. अगर उनकी आपस में डिपेंडेंसी हो गई, फीचर 1, फीचर 2, फीचर 3, तो फिर आपका क्लासिफिकेशन एडिक्वेट नहीं होगा. अब इसको हम एक डेटा सेट की मदद से समझते हैं. कंसीडर ए फिक्शनल डेटा सेट. अपने एक डेटा सेट क्रिएट किया हुआ है यहाँ पर. Describes the weather condition for playing game of golf. Given the weather condition, each tuple classify the conditions as fit yes or unfit no for playing a golf. See, यहाँ पर हम एक डेटा सेट पर काम करते हैं, और उस डेटा सेट का जो टारगेट है, the basic target behind the data set is what? The basic target of the data set is simply to understand कि अगर हमें गोल्फ खेलना है, तो उस गोल्फ को खेलने के लिए we are talking about this one. Consider fictional data set describes the weather, the condition for playing a game of golf. Given the weather condition is a tuple classified as fit yes or not. तो क्या वेदर की कंडीशंस गोल्फ खेलने के लिए ओके हैं या नहीं है? That is what the classification. Yes or no. The conditions are matching, features are matching to play a golf. Yes or not matching, then no. So this is exactly what the target we are going to have. Now, with respect to that, let's start with the understanding of a data set. जब हम इस data set को समझ लेंगे, we would be able to justify it better.
उसको हम अच्छे से कर पाएंगे. तो what sort of a data set we have just taken? देखते हैं इसको. So we have just taken a certain data set. We have just taken a certain data set. This is basically a data set we are taking. So first of all, check it out that what are the parameters we are creating. We are creating first parameter, outlook. देखने में मौसम कैसा लग रहा है, रेनी है, ओवरकास्ट है, सनी है, टेम्परेचर कंडीशन कैसी है. सेकंड सिचुएशन, ह्यूमिडिटी कैसा है, यस, विंडी है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स. गोल्फ आप इस सिचुएशन में इन सारी सिचुएशन के साथ में खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते. तो इफ यू सी हियर द रेनी, हॉट, हाई एंड विंडी, under all these situations if we say we cannot play a golf. So what is required to play a golf? Overcast, it should be hot, it means dry. Humidity, it should be high. And if it is not windy, it's okay, you can play the golf. So there is no issue, there is no challenge, you can play the golf. Similarly, moving ahead under this same situation, we try to find out what are the other situations to play the golf. Can you play in the sunny? Yes. If it is the weather is mild, yes, you can play the golf. If the humidity is high, again you can play the golf, but it should not be windy. Windy नहीं होना चाहिए. ठीक है. So similarly, if we try to understand this one, then what happens? The various situation you will get true in the first situation. So it means there's a set of conditions, the different set of conditions, not only the one fixed set of conditions. They are the different set of conditions over which what happens, and the different situations over which there is a chance to get that whether one can play the golf or not. So now what is that? Now you are trying to have a classification of a situation. Under this situation, golf can be played. इस सिचुएशन में गोल्फ खेल सकते हैं, इस सिचुएशन में गोल्फ खेल सकते हैं, इस सिचुएशन में गोल्फ नहीं खेल सकते. तो फीचर्स कौन से हैं? देखिए सारे के सारे फीचर्स कैसे इंडिपेंडेंट है. दिखने में कैसा लगता है? रेनी, टेम्परेचर, ह्यूमिड, windy, then you can play. So all the features are different and they are different from each other. तो वो सारे के सारे एक दूसरे से different है. तो under this situation, what you are trying to do? यहाँ पर हमने डेटा दिया. Now check it out. What exactly the objective to go for? The data set is divided into the two parts, namely feature matrix and response vector. एक आपका feature matrix है और दूसरा आपका response vector है. So feature matrix and the response vectors are there. Feature matrix contains all the vectors rows of data set in which vector consists of a value of dependent features. In above data set, here we look outlook, temperature, humidity, and windy. The response vector contains the value of a class variable for each row of feature matrix in which the above data set, the classifier will be play a golf. So अब playing a golf class of variable क्या है? Response vector कौन सा हुआ हमारा? Response vector तो हमारा ये हुआ कि golf खेलना है या नहीं खेलना है. और बाकी के जो डिपेंडेंट हो गए, जिनके ऊपर डिपेंड करती है सिचुएशन, गोल्फ खेल सकते हैं, नहीं खेल सकते हैं, वो कौन सी सिचुएशन है? वो सिचुएशन ये है कि गोल्फ खेल ना पाने के लिए वो सिचुएशन ये आउटलुक, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, windy, and this situation. So fundamental need based assumption is that. अब आते हैं, आके ये समझ में आ गया कि हम यहाँ पर क्या कोशिश कर रहे हैं. यहाँ पर हम प्लेइंग गोल्फ किस बात पर डिपेंड करेगा, उनको बोलेंगे हम डिपेंडेंट फीचर्स, और वो रिस्पॉन्स वेक्टर कहलाएगा जो एक्चुअली हमारा आउटकम है, जिसको कि हम बेसिकली प्रेडिक्ट करना चाहते हैं. That's it. The fundamental naive-Bayes assumption is that each feature makes us independent, equal contribution to the outcome. अब हमने क्या किया? The fundamental of naive-Bayes क्या कहता है? Each feature makes an independent and equal. ठीक है? Independent, equal contribution to the outcome. With relation to our data set, this concept can be understood as we assume that no pair of features are dependent. For the example, the temperature
being hot has nothing to do with the humidity or outlook being rainy, has no effect on the winds. Hence, the features are assumed to be independent from each other. तो ये सारे के सारे डिपेंडेंट फीचर, देखिए दोनों बातें अलग अलग है, समझिएगा ध्यान से। ये सारे के सारे डिपेंडेंट फीचर क्यों है? क्योंकि इनके ऊपर डिपेंडेंसी है कि गोल्फ खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते। गॉट इट? पर ये आपस में इंडिपेंडेंट है या नहीं है? यस, दे आर इंडिपेंडेंट, बिकॉज इफ यू सी एट द बैक साइड under this situation, so it might be possible कि इन दोनों में, if it is a hot, it's okay, one is not able to play a golf, but again if it is a hot, one can play the golf. But so all the situations are completely independent to each other. But the second factor is a rainy and overcast. Obviously it is dominating factor. बारिश हो रही है, temperature will not have any effect on a rain. भाई कितना भी टेम्परेचर हो आपके लिए, कितना भी फेवरेबल टेम्परेचर हो, whatever the situation will be there, if it is a rainy, definitely there is no situation to play. So whenever you get a rainy, obviously there is no chance to play at all. That's it. So coming back the second point. So now what we are trying, naive Bayes assumption is that each feature makes an independent or equal contribution to the outcome. Secondly, each feature is given the same weight or importance. For example, knowing only temperature and humidity alone cannot predict the outcome accurately. None of the attribute is irrelevant and assumed to be contributing equally to the outcome. सबका अपने आप में equal महत्व होना चाहिए, value होनी चाहिए. That is what's important. The assumptions made by the naive. Now coming on the point, the assumptions made by the naive, अब जो हम जिन assumptions की बात कर रहे हैं ना, naive are yes, in fact जो हमने अब assumptions माने हैं, the assumptions made by the naive are not generally correct in real world situation. In fact, the independence assumption is never corrected but often works well in practice. कहने का मतलब है कि लोग देखिए, दो अलग अलग बातों के बीच में डिपेंडेंसी और इंटरडिपेंडेंसी एक बहुत अपने आप में बड़ा बिग चैलेंज क्वेश्चन है ना, मतलब बिग क्वेश्चन. तो अंडर द सिचुएशन फ्यू assumptions are always being taken up. assumptions ले लिए जाते हैं, ठीक है. The Bayes theorem, what the Bayes theorem says. Bayes theorem finds the probability of an event. अब बातें हैं Bayes theorem की. Now before moving to the formula, understand कर लेते हैं Bayes theorem खुद कहती क्या है. आप सब लोगों ने हो सकता है पहले भी कभी पढ़ रखी हो Bayes theorem को, है ना. Let's take a review of it. इसका रिव्यू लेते हैं. Bayes theorem finds taking one more screenshot. So Bayes theorem finds that probability of an event occurring given the probability of another event that has already occurred. ठीक है. Bayes theorem is stated mathematically as a following equation. तो अगर आप चलेंगे Bayes के starting के statement में what it states, ये जो मैंने green highlight किया है, बस ये क्रक्स है. देखिए बड़ा अच्छे से समझने की बात है. बहुत सारे नेचुरल फिनोमेना जो हैं ये सारे कहाँ से आए हैं? नेचर से आए. और नेचर में भी ये जो फिनोमेनास थे, ये सारे के सारे जितने भी फिनोमेनास थे, उन फिनोमेनास को डिफाइन किया गया. अब डिफाइन किया गया, लोगों ने कहा कि जो आप फिनोमेनास की बात कर रहे हैं वो सही कैसे हैं. तो सही करने के लिए मैथ्स ऐड कर दी गई और कहा गया देखिए ये 2 into 2 = 4 होता है, इसीलिए चार लोग यहाँ, दो पहले आए दो बाद में आए, मिलके चार हो गए. तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग द 4 इज राइट. मेरी मैथमेटिक्स भी ये कहती है कि इस पर रूल लगा दीजिए. उन्होंने पूछा एक बार 5 आए फिर अगली बार 5 आए तो क्या करेंगे?
तो उन्होंने इसी कंसेप्ट को यूज किया कि 5+5 को ऐड कर दीजिए, फिर से 10 हो जाएंगे। 5 कोई काम 5 बार करते हैं तो क्या होगा, तो वहां मल्टीप्लीकेशन लगा दिया। तो एक ऐसे सेट ऑफ कॉमन रूल्स यूज किए गए मैथमेटिक्स के थ्रू, जिनसे ये सपोर्ट लिया गया, इनसे माना गया कि दीज आर द वैलिडेटेड वन, बिल्कुल वैलिडेटेड, ऐसा सोचा गया, ऐसा कहा गया। तो हर थ्योरम का जो मतलब है वो नेचर के किसी सिग्निफिकेंस और फिनोमेना से ही इंस्पायर्ड है, बट उस फिनोमेना से इंस्पायर्ड होने के बाद उसको वैलिडेट करने के लिए, उसको प्रूव करने के लिए, उसको सही कहने के लिए क्या जरूरी है, उसको सबको सही कहने के लिए जरूरी है क्या, मैथमेटिकल इक्वेशंस एंड एल्गोरिथम्स। वही यहां पर की गई। तो बेस ने क्या कहा, थ्योरम्स फाइंड्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट occurring given the probability of another event that has already occurred। मतलब इन्होंने कहा कि उसकी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कीजिए जो इवेंट हो रहा है, गिवन द प्रोबेबिलिटी ऑफ अनदर इवेंट इट हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो दूसरे जो हो चुका है इवेंट उससे रिलेटेड की जाएगी। बेस्ड ऑन स्टेटेड मैथमेटिकली ए और बी, ए एंड बी में आपने जो यूज किया है प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर रहे हैं, बी और ए के रिस्पेक्ट में फाइंड आउट कर रहे हैं, फिर जो इंडिविजुअल ए की है और जो बी की है उसके रिस्पेक्ट, वे ए एंड बी आर इवेंट्स, दो अलग अलग इवेंट है। और जो इवेंट है पीबी वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, मतलब हुआ ही ना हो ऐसी कोई बात भी हो जाए। मैथ्स है ना भाई, मैथ्स तो कह देती है कि हाँ कहाँ से शुरू होती है कोई चीज, 0 से शुरू होती, तो जहां 0 से शुरू कर दी वहीं पे समस्या। तो स्पेशल कंडीशन मैथ्स को हमेशा डिफाइन करके रखना पड़ता है, इट्स नॉट इक्वल्स टू 0। बेसिकली वी आर ट्राइंग टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी गिवन दैट बी इज ट्रू, बी हो चुका है। इवेंट बी इज ऑल्सो टर्म्ड एज एविडेंस, क्योंकि वो हो चुका है इसलिए एविडेंस है। PA is a priori of A, the prior probability होने की से पहले की संभावना, probability of event before evidence is seen, the evidence is an attribute value of unknown instance, here it is a event B। PAB is a posterior probability of B, that is probability of event after evidence is seen, होने के बाद उसकी क्या संभावना थी। Now with this regard our data set we can apply Bayes theorem in the following way, पी वाई एक्स, पी एक्स वाई, पी वाई, किसी भी इवेंट पे लगा सकते हैं जहां पे वाई और एक्स के बीच में आप क्लास ऑफ वेरिएबल यूज कर सकते हैं। Now choosing this up, the same A or B, we are taking A as x, y, and we are taking B as x. So now check it out. Conditions we are picking: x rainy, hot, high, and false condition. ठीक है। Under this situation, there is a probability अगर ऐसा होता है तो क्या आप गोल्फ खेल पाएंगे? No, we cannot play a golf. So this y is no. So basically PYX here means the probability of not playing golf, given that the weather condition rainy, outlook temperature is hot, high humidity, and no wind. Naive assumptions. Now coming on this one. Now it is a time to put a naive assumption to the Bayes theorem, which is independent among the features. So now we split the evidences into independent parts. So if any two events A and B are independent, then जो पी ए बी की जॉइंट प्रोबेबिलिटी होगी वही प्रोबेबिलिटी इनके इंडिविजुअल की भी होगी, ये मैथमेटिकली कहा जा सकता है। Hence we reach to the result, इससे आप किसी की भी प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। So what they are doing if a multiple of the events are there, so on the basis of the same one, what we are trying to do, we are trying to make px1 y, px2 y, pxn y, because what we are saying, if they are definitely independent, their joint probability can easily be calculated through their multiplication। बड़ा सीधा सा रूल है, इसमें कोई कंफ्यूजन होने की बात ही नहीं है ना। तो अब मल्टीपल इवेंट एक साथ हो रहे हैं, मतलब आपने क्या किया, किसी एक y के होने की जो प्रोबेबिलिटी आप आइडेंटिफाई कर रहे हैं उसके साथ में आप बहुत सारे x हैं, बहुत सारे इंडिपेंडेंट फैक्टर्स एंड फीचर्स हैं। इजी है ना, समझ में आ गया होगा। बहुत सारे इंडिपेंडेंट x1 x2 xn, यानी कि रेन है, हॉट है, ह्यूमिडिटी है, ये सारे कई सारे एक साथ फीचर्स आ गए। ऐसा बहुत जगह आपका ब्रेन भी करता है। आप ये मान के चलिए, इसको हम लिख जरूर मैथ्स में रहे, कॉम्प्लेक्सिटी है, बिल्कुल वैसा ही है जब मार्केट में जाते हैं और एक कार खरीदने जा रहे हैं। सो यू हैव अ सिंगल ऑब्जेक्टिव, वेदर टू बाय कार और नॉट टू बाय। देखिए कितना सिंपल क्लासिफिकेशन है, कार खरीदनी है या कार नहीं खरीदनी है, यस और नो। नॉन क्लासिफिकेशन है, घर से सोच के जाएंगे कार खरीदनी है, या तो खरीद के लाऊंगा या नहीं खरीद के लाऊंगा, दो ही ऑप्शन है। गॉट इट।
है ना। अब वो एक अलग बात, उसको बुक करने को आप खरीदे ना खरीदे का एक अलग बात है, ऐसा नहीं, पर खरीदिए या नहीं खरीदिए, यस और नो, obviously. So yes will be depending upon certain kind of a feature you have in your brain that if they are meet out. अब आप क्या करें, जब कार खरीदने जाए तो उसका कलर होना चाहिए, उसका आउटलुक होना चाहिए, हाउ इट लुक्स लाइक, ये सारे इंप्रेशंस आपके दिखाई देने चाहिए इन अ सिचुएशन. सो ऑल दीज फैक्टर्स, जितने भी ये सारे फैक्टर्स, मल्टीपल फैक्टर्स हैं यहाँ पर, ऑल दीज मल्टीपल फैक्टर्स एग्जिस्ट एट अ टाइम. की कलर भी आना चाहिए, ड्राइविंग व्हील को भी चेक करना है किस तरीके का है, बूट स्पेस को भी चेक करना है, सिक्योरिटी फीचर्स को भी देखना है, नाउडेज जो सेंसर्स भी हैं, एवरेज भी है, माइलेज भी, और किसी किसी के लिए तो इम्पोर्टेंट है कॉस्ट भी. दैट्स इट. सो अब आप देखिए, एक ऑब्जेक्टिव सिंगल, वेदर टू परचेज और नॉट, yes or no. The yes and no is depending upon a multiple kind of a feature. If suppose you are getting a red color, your favorite color is the red color, and you are getting a red color there, it might be possible you are not getting a safety feature in that red color car, or you have a certain kind of a brand as a primary feature, but you're not getting all kind of features you're looking for the same one. So this is what the probability. So you need to go with the probability. So there always there is a uncertainty. We always say this. हम हमेशा कहते हैं कि हर किसी काम को घर से करने निकल रहे हैं, आप कोई काम श्योर नहीं है, हर काम में एक अनसर्टेनिटी है. तो ये अनसर्टेनिटी जो है हमारी, उसी उसी के लिए हम प्रोबेबिलिटी आइडेंटिफाई करते हैं, और ब्रेन भी हमेशा प्रोबेबिलिटीज पे ही काम करता है. जैसे लोगों को कहते हैं मैं घर से निकलूंगा, श्योर नहीं हूँ पहुंचूंगा नहीं पहुंचूंगा, क्यों भाई? अनसर्टेनिटी. isn't it isn't it So here we reach out to the results इस तरीके से, which can be expressed in summation की फॉर्म में लिख लिया, and now the denominator में हम सीधे इसके सिग्निफिकेंस पर आएंगे, है ना, इसके सिग्निफिकेंस पर आएंगे. Now we need to create a classifier model. For this we find a probability given set of values. अब so finally we are left with the task of calculating py. अब आपने क्या किया, इसके लिए अगर आपको कैलकुलेट करना है तो देखो यहाँ पर उन्होंने एक छोटे से मॉडिफिकेशन किया. Now as the denominator remains constant, ये जो values हैं ये particularly constant ही रहेंगी for a given output, we can remove the term. उन्होंने कहा कि proportionality totally depend कर गई किसके ऊपर, ऊपर वाली values के ऊपर. ये तो इनके सबके होने की प्रोबेबिलिटी, वेदर है, हॉट है तो हॉट है, ह्यूमिड है तो ह्यूमिड है, जो कंडीशन है वो है. Now what they are doing, they are identifying that this is totally depending upon this one. Now we need to create a classifier model. For this we find the probability to given set of input for possible values of class variable y, pick up the output with the maximum probability. तो उन्होंने y के रिस्पेक्ट में जो निकाला वो this is the pxy. उन्होंने कहा पी वाई आपको कैलकुलेट करना है, डिनोमिनेटर टर्म की तरफ जाके लेगा, डिनोमिनेटर टर्म में जाने के बाद में दे आर जस्ट गेटिंग दिस इज अ पी वाई एक्स. सो दिस इज argument maximum value of this they are trying to find. So finally what they are doing, finally we are left with the task py pxiy, ये आपको निकालनी है बस. तो क्या नेम दिया उनको, नाम दिया. प्लीज नोट दैट py is also called a class probability. जिस किसी भी क्लास की आप बात करें उसकी खुद की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी is called as a conditional probability. ये खुद की क्लास की खुद की प्रोबेबिलिटी हो गई, और ये कंडीशनल हो गई कि जो कि डिपेंडेंसी इसके ऊपर y और x की आपस में दिखा रहा है. The different name based classifier differ mainly by the assumptions to make regarding pxi. Let us try to apply the above formula manually to our weather forecast system. For this we need to do some pre-computation on our data set. हमने कुछ computations किए. We need to find pxy for each ixy and all calculating having the demonstration in the table below. Outlook निकाला, outlook के respect में देखा, sunny है, overcast है, rainy है और total. तो उन्होंने कुछ अपने हिसाब से कैलकुलेटेड फैक्टर्स निकाल लिए कि क्या क्या प्रोबेबिलिटी इनके बीच की बन रही है. फिर उन्होंने सिमिलरली टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में करी, वही उन्होंने ह्यूमिडिटी के रिस्पेक्ट में करी, फिर उन्होंने वही विंड के रिस्पेक्ट में करी. ठीक है. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ यस कितनी आई, कितने इस पूरे के पूरे सेट में से, अब ध्यान से देखिएगा सेट यही है, तो इन्होंने आउटलुक के रेस्पेक्ट में निकाला कि कितनी बार आउटलुक के रेस्पेक्ट में हम गोल्फ खेल पा रहे हैं. दैट इज व्हाट दे आर डूइंग. तो कितने बार सनी में आप खेल पा रहे हैं, 2 बार, और कितनी बार नहीं खेल पा रहे हैं, 3 बार. तो सनी की इंडिविजुअल निकाली आउटलुक के केस में. ऐसे टेम्परेचर कितनी बार हॉट कंडीशन में आप खेल पा रहे हो, ये तो चार्ट बन जाएगा, इंडिविजुअल बॉक्सेस बना लिए.
तो सबकी प्रोबेबिलिटी आ गई। यहाँ पर आउटलुक नो प्रोबेबिलिटी निकाल ली, यहाँ पे प्ले नो, यहाँ पे भी निकाल ली, यहाँ पे भी निकाल ली, इनमें से सबके ना की प्रोबेबिलिटी निकाल ली। सो इन दिस फिगर सबके बीच में निकाल ली, प्ले यस प्रोबेबिलिटी निकाली, नो की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है, टोटल प्रोबेबिलिटीज हमने फाइंड आउट कर ली। ठीक है, अब ये ओवरऑल कैलकुलेशन निकाल ली। ओवरऑल कैलकुलेशन किस हिसाब से निकाली कि आउटलुक के सबके टोटल केस कितने हैं, टोटल केस है 9। अब 9 केस में से 9 की कितनी प्रोबेबिलिटी आ रही है वो कैलकुलेट कर ली। फिर उसके बाद में यहाँ पर टोटल केस निकाल लिए, टोटल निकालने के बाद में यहाँ पे प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करेगी किसने। तो आप जरा ध्यान से देखिए, इन सब का इन्होंने फाइनली यहाँ कैलकुलेशन किया कि 9 है, 8 टोटल 5 है, तो ये तो इंडिविजुअल केसेस और टोटल केस। टोटल कैसे निकाला, टोटल निकालने के लिए कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं, ये सारे टोटल टोटल 14 केस है आपके पास, है ना, 0 से स्टार्ट हो गए 13 तक। 13 में कितनी बार यस है, कितनी बार नो है, इजी। तो इस तरीके से 5 डिफरेंट टेबल्स आपके पास बन गई। कितनी बार आउटलुक के केस में आप खेल पा रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, सबकी इंडिविजुअल आ गई, सबकी इंडिविजुअल आ गई। सो इन द फिगर above we have calculated the x y for each xi, हमने अलग अलग निकाली and y ना मैनुअली। For example, probability of playing golf given the temperature is cool, that is P temperature equals to cool of play golf, yes, it's 3/9. So you see, it's 3/9. So let us test the new set of features. अब उन्होंने कहा कि टुडे, आज एक टुडे करके फीचर बनाया, आज की कंडीशन ले ली जिसमें नई कंडीशन है ना। अभी हमने सारे पैरामीटर्स कैलकुलेट कर लिए। अब पैरामीटर कैलकुलेट करने के बाद आज हमने एक बिल्कुल नई कंडीशन बनाई जो कि पुराने डेटा सेट से मैच नहीं करी, कुछ अलग है, सनी है, हॉट है, नॉर्मल एंड फॉल्स है। व्हाट हैपेंस इफ यस, सो प्रोबेबिलिटी ऑफ प्लेइंग गोल्फ इज गिवन बाय, कैसे आएगी, यस डिपेंडिंग अपॉन टुडे, पी सनी आउटलुक यस, पी हॉट टेम्परेचर यस, नॉर्मल ह्यूमिडिटी यस, नो विंड यस, एंड पी यस। इनके रेस्पेक्ट में हम हमें निकालनी है। तो सनी आउटलुक वाला आप चेक कर लो, हॉट टेम्परेचर वाला आप चेक कर लो, नो ह्यूमिडिटी वाला यस का चेक कर लो, नो विंड का यस का चेक कर लो। तो अब आप जब इन प्रोबेबिलिटीज को चेक करेंगे, एंड प्रोबेबिलिटी नॉट टू प्ले अ गोल्फ इज गिवन बाय नो की ये आ गई, सबके नो के रिस्पेक्ट में आ गई। यस टुडे में अब आप चेक करो, सनी आउटलुक किया पहला वाला 2/9 कहां से आया, इस चार्ट में से 2/9, यस। सो आपके पास यस और नो दोनों की प्रोबेबिलिटी है 2935, 4905, 3925, सबकी प्रोबेबिलिटी आपके पास में है, नो इश्यू एट ऑल। तो अब आपने यस की प्रोबेबिलिटी यहाँ से निकाल ली, नो की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे निकाल ली, दोनों को टेका, दोनों का सम यस। दीज नंबर्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू द प्रोबेबिलिटी बाय मेकिंग द सम इक्वल टू 1, 0.0141 है, इन दोनों को इक्वल करने के बाद में आपने इनको नॉर्मलाइज कर लिया, और नॉर्मलाइज करने के बाद आपने नॉर्मलाइजेशन फैक्टर सिंपल मैथमेटिक्स से नॉर्मलाइज कर लिया और नॉर्मलाइज करके बना लिया। सो प्रेडिक्शन दैट गोल्फ विल बी प्लेड इज यस। अब दोनों में से किसकी वैल्यू ज्यादा है, नो की ज्यादा है या हाँ की ज्यादा है, तो आपने देखा 0.67, ये ज्यादा वैल्यू आ गई, खेल लीजिए गोल्फ। यानी कि इस नए टेस्ट के हिसाब से अब आपकी मशीन आंसर देने लगेगी, नए टेस्ट के हिसाब से आपकी मशीन आंसर देने लगेगी, और आपकी मशीन ने आपको इस नई टेस्ट कंडीशन में, इस नई टेस्ट कंडीशन में आंसर दे भी दिया। उसने कहा कि क्योंकि आपकी प्लेइंग प्रोबेबिलिटी, वैसे भी देख के समझ में आता है, आपकी प्लेइंग प्रोबेबिलिटी हाई आ रही है, तो आप यस यू कैन प्ले। सो दिस प्रेडिक्शन इज बेसिकली वर्किंग एज लाइक दिस वन। तो इस तरीके से ये आपका यहाँ पर मॉडल काम करता है, एंड अंडर दिस मॉडल you can create a distribution curve, so you can find out the different probabilities। आप अलग अलग probabilities find out कर सकते हैं, देख सकते हैं, और उन अलग अलग probabilities को find out करने पर आप ये check कर लेंगे कि क्या है, तो आप इस तरीके से एक distribution curve भी create कर सकते हैं, है ना, इस तरीके का। तो distribution curve ये बताएगा कि under what situation the best probability will be there, किस situation में सबसे अच्छी probability आपको मिलेंगी। दिस कैन बी, मतलब सारे सेट ऑफ कंडीशंस के बाद में डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपका कैलकुलेट किया जा सकता है। सो आई एक्सपेक्ट ये जो नई बेस का जो हमने कंसेप्ट यहाँ पे डेवलप किया है और जो आपको बताया है सबको, ये सबको समझ में अच्छे से आ गया होगा। और फिर भी अगर कोई डाउट है, सो फ्रॉम माई साइड, although I am done with my today's concept, giving information of with example of Gaussian naive Bayes classifier, ये आपको कंटेंट मिल जाएगा, वीडियो रिकॉर्डिंग आपके पास में अवेलेबल है ही यूट्यूब पर, इजीली वहां जाइए, यू कैन इजीली टॉक।
Anything related with today's topic you wish to ask, you can get it. आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, क्योंकि गॉसियन में जो हमने किया नेव बेस क्लासिफायर, इसमें और ऐड कर देते हैं बेस थ्योरम पढ़ी, बेस थ्योरम के बाद में उसमें नेव ऐड कर दिया, नेव ऐड करने के बाद गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन को भी ऐड कर दिया, तो नेक्स्ट आपका स्टेप यहाँ पर आ जाएगा. दिस इज ऑल अबाउट. ठीक है. So ultimately the target is here. You can easily find out if today is a condition is sunny, overcast, rainy, then under this situation you would be able to identify whether to this. और इसी टाइप का डेटा सेट आप अपलोड करके इसको पाइथन पे भी कर सकते हैं, बट बिकॉज इट इज अ थियोरेटिकल पार्ट, फॉर योर ओन नॉलेज और प्रैक्टिस आप पाइथन पे काम कर सकते हैं. सो थैंक यू सो मच. आई एम डन फ्रॉम माई साइड. एनी क्वेश्चन यू मे आस्क. आप कुछ भी पूछना चाहते हैं बात कर सकते हैं.